अभी यूएसडी में हम ट्रेड लेने वाले हैं, देखते हैं ट्रेड मिलता है कि नहीं। हमारे मॉडल के हिसाब से अभी स्विंग 15 मिनट में देखते हैं क्या हो रहा है अभी। ओके, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट का है। ये वाला यहाँ से सेल साइड के लिए जाएंगे। कुछ मार्केट स्ट्रक्चर अगर शिफ्ट होगा तो सेल साइड के लिए जाएंगे। हेलो अमृतांश, हाउ आर यू? For our structure, break of structure, this is the strong low. प्राइस यहाँ से तो बुलिश है, बट वी कांट बाय बुलिश। अभी बुलिश कैसे जाएं, क्योंकि ऑलरेडी यू नो हम इस जो ये एंड स्विंग है यहाँ पे कुछ बुलिश देख सकते थे, लेकिन मार्केट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड पुशिंग 15 मिनट में। as the price has shifted bullish from this side, so this will be a change of character, so we are still bullish, up down up down up. This is the break of structure, and also session high has been broken already. अभी और कुछ बचा है तो वो है न्यूयॉर्क का हाई, लंदन का हाई जो इस हाई पे बढ़ा है। ओके, लेट्स सी। दिस ऑर्डर ब्लॉक इज नॉट ट्रेडेबल राइट नाउ। नो, वी कैन ट्रेड इफ द पुल बैक कम्स, बट नॉट नाउ। विल गो टू 5 मिनट। अभी क्या है इधर, यहाँ से अभी मार्केट शिफ्ट हुआ था बुलिश, ये यहाँ से मार्केट बुलिश गया, एंड नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वी गॉट वाज हियर। नाइस। इंटरनली तो यही है एक्स, यस यस। आफ्टर डूइंग दिस स्वीप इट वेंट अपसाइड upside upside, but we didn't get a sweep to this high. We'll wait. What is the change of character? Change of character is when the market का trend change होता है, like if market is falling and suddenly it starts going upside. But let me draw and show you. 1 second. Open the live. तेरे ही प्यार मेरा मन, तेरे ही प्यार, तेरे बिन सोने सोने निगाह। लाइव चैट या हाय सैन निखिल। See, break of change of character is like abhi if market is going bullish, something like this. Okay, now what is it doing? It's breaking the highs, higher high. It's breaking higher highs. ये अपना higher high को break कर रहा है, ठीक है। सो ये बुलिश ट्रेंड का एक बिहेवियर है कि वो हायर हाई को ब्रेक करता है। व्हेन इट स्टार्ट्स, यहाँ पे लोअर हायर लोज तो प्रोटेक्टेड है ना, तो जब तक लोअर लो ब्रेक नहीं होता तब तक ये हायर हाई बनाते रहेगा। जब ये लोअर लो ब्रेक होगा, ये जो लोअर लो ब्रेक होगा उसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसके बाद मार्केट जो अप ट्रेंड में था वो बेरिश ट्रेंड में चला जाएगा। इफ आई शो इन मार्केट, अभी देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, I'll remove this, I'll draw it again, ठीक है। What is price doing? Price is coming bearish, नीचे आया,
ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है. So I'll bring it outside. You can see the lower lows are getting broken. It means this is in downtrend. This is getting broke, this got broke, and this got broke, but these highs are not getting broken. ये protected है. So whenever any of this lowest high, जो अभी recent high यही पड़ेगा, तो अगर ये break हो गया, मतलब अगर नीचे वाला ब्रेक होता है तो अनदर हाई बनेगा. अगर नीचे वाला बिना ब्रेक हुए ऊपर वाला ब्रेक हो जाएगा तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा. इट मीन्स चेंज, मतलब ट्रेंड अभी चेंज होने वाला है. हाउ आई कैन आइडेंटिफाई हियर इज, सी एज आई सेड, ये वाला अभी रिसेंट हाई जो ब्रेक नहीं हुआ है. नेक्स्ट लो इज दिस वन, सो वी नीड नेक्स्ट लो टू दिस लो टू बी ब्रोकन टू कंटिन्यू द डाउन ट्रेंड. बट व्हाट मार्केट डज, दिस डजंट ब्रेक द लो बट इंस्टेड इट ब्रेक्स द हाई. So the high is getting broken somewhere here. So after this broke of this high, the trend will change to bullish. So when the similar thing happens now again, the trend will change to bearish. That's what we are waiting. So अभी ये वाला यहाँ पे हुआ था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो आई विल नॉट प्लॉट बिकॉज अभी वो प्राइस तो यहाँ पे है ना, तो वहाँ का क्यों मार्क करूँगा मैं. सो यहाँ पे अभी वी आर जस्ट कटिंग कंटिन्यूसली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स. इधर एक मिला है एंड हियर वी गॉट अनदर, हियर दैट्स नॉट क्लियर बट हियर वी हैव, एंड अभी फिर से यहाँ पे मिला. नाउ हियर वी आर गेटिंग अ स्वीप. सो आई विल रिमूव दिस. यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है क्योंकि 5 मिनट में बहुत मतलब कंसोलिडेटेड कैंडल्स बन रहे हैं. विल गो फॉर स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक 1 मिनट. यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर्स देखो हाउ इट्स कमिंग. लाइक यू कैन सी price went up, came down, broke high and did this. So this low is not a swing low now, this is the swing low. Another swing low will be this, because see after this break of high we'll consider this as swing high because the swing is in this form. It went up, down, it broke high but didn't broke the low, means this will be the next high because this low is protected, right? So this is still in uptrend. Now this is the swing. Next we got a break here, down, here, down. I'm sorry. And again it went up and it came down. So this is an uptrend. See here break of structure has happened. So this is how you can use these lines to mark. Canvas and candles colors is too cool. Yeah, sure bro, 1 second. So this is the break of structure, I'll mark it, and this is the swing low. Currently I am bullish, but in 5 minutes it's too bullish, so I cannot go enter another bullish trade, or else I would have marked this order block and took a 1:1.5 trade. But now I want to take some bearish trade because my bias is bearish right now. And regarding colors, I'll mark it in the, I'll show firstly the chart color. This is the chart color. Chart color C6 C0 B6. Okay. And candles, we can pause and check. See, my wicks are completely not black but something kind of this gray. Okay, even the borders are the same. Candles is a bit lighter one than that, and body will be same background color. That's it. This is all, and nothing else I have changed. Yeah, safe way change. I have some different templates. There go. I have this one. I use this also. This is also looks nice, and I have this theme, PB theme. Okay, you can pause it and check there. So now see, again we are getting another high break. I think, see, this is the protected low, swing low, because uptrend is there, so high should be broken to continue the uptrend. If this doesn't get broke, we'll see in 5 minutes. 5 minute we don't have any structure. 5 minutes we have just supply zones, I mean demand zones.
These are the demand zones where the pullback has happened. So we'll see. I of course don't enter in 5 minutes, but if you want I can give trades in 1 minute. Sorry, I don't enter in 1 minute. I don't like. Okay, it's too completely bullish. You can see structure, like, yeah, people may feel FOMO here, like क्यों मिस करना है ये वाला मूव, इतना अच्छा बुलिश जा रहा है, बट अभी हमें एंट्री नहीं मिलना. बिना एंट्री के हम कैसे एंटर करें? अगर एंट्री मिलता तो देखते. एंट्री कहाँ पे मिलता? अगर मिलता तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वाला हमारा ट्रेड जो है वो यहाँ पे बना नहीं है. वो बना होगा तो यहाँ पे नीचे बना है. यहाँ पे अगर यहाँ पे बना है एंट्री, क्योंकि यहाँ पे स्वीप है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप भी है. तो ये अगर यहाँ पे एंट्री पकड़ते मेरे ऑर्डर मॉडल के हिसाब से, तो इतना छोटा स्टॉप लॉस, और अगर ट्रेल करोगे तो कहाँ तक है भाई? पूरा आसमान. दैट्स व्हाट. बहुत एक्सट्रीम जोन्स पे बनता है, इसलिए मैं यहाँ से बुलिश नहीं जाना चाहता. यहाँ पे बेरिश अगर मिलेगा तो लंबा पकड़ना चाहता हूँ 5 मिनट में. एंड जैसे कि मैंने रूल्स बनाया है कि मैं सिर्फ एक ही पे ट्रेड करूँगा, सो दैट्स वाई मैं, और ना तो मैं JBP में कुछ ट्रेड देखना चाहता था. लेकिन यहाँ पे भी सेम ही अपना चल रहा है. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 मिनट में स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा है. 15 मिनट में मार्केट बेरिश आ रहा था, मार्केट बेरिश आ रहा था. अभी क्योंकि ये 1 आवर में मार्केट का ट्रेंड बुलिश है एंड 15 मिनट में बेरिश से बुलिश टर्न हुआ है, सो ये वाला एक अच्छा जोन था बुलिश एंट्री के लिए. ठीक है, लेकिन देखो अभी यहाँ से तो लंबा बड़ा टाइम फ्रेम भी बुलिश है, 15 मिनट वाला भी बुलिश ही चल रहा है. क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ 15 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, 50 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होकर बुलिश जा रहा है. सो अभी मैं एक और बुलिश एंट्री मेरे को लेना है, तो आई वांट दिस प्राइस टू कम डाउन टू पुल बैक एंड देन, तो यहाँ पे इस जोन पे मेरा बुलिश एंट्री बनेगा, इस जोन पे. ओके, एक और बुलिश एंट्री. यहाँ पे मैं रैंडमली बुलिश नहीं जा पाऊँगा, सो दैट्स वाई आई एम वेटिंग फॉर पुल बैक, और अदरवाइज आई नीड अ सेल साइड एंट्री फ्रॉम हियर. देखो इट्स वेरी सेफ टू गो बुलिश. यहाँ से अगर बुलिश जाना है तो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया. इस जोन से कहीं से तो समथिंग हियर आएगा. देखो ये वाला जोन भी है, यहाँ पे भी ये भी है, तो इस जोन से बुलिश जाना अच्छा रहेगा. Until that I can't take any bullish trades because break of structure हुआ है तो पुल बैक तो होगा. That's why. टन 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 टन. तेरे प्यारी मेरी सूरत में तुझे सलाम. ना 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 guys, like the stream, like the stream, like the stream. Bro, can you वंदे मातरम. लेट्स सी कुछ बेरिश ट्रेड. अब बेरिश के लिए भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना पड़ेगा. बेरिश के लिए भी ये तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया फिर से. अगर और भी बुलिश जाना है तो कहाँ तक जा सकते हैं? देखो मेरे को यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक गंदा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन हो सकता है. पुल बैक भी होगा यहाँ से. ठीक है, दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पे बुलिश नहीं जाना चाहता, क्योंकि और यहाँ पे कुछ बचा भी नहीं है बुलिश टारगेट करने के लिए. हाँ, ये वाले सेल साइड लिक्विडिटीज, मतलब अपने लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटीज पड़े हैं ये वाले, जिसको हंट होना है. लेकिन हंट होने से पहले पुल बैक तो चाहिए ना. सो दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग, क्योंकि आई नीड अ ट्रेड टुडे. that will give me profit. If you have any questions, you guys can ask.
Can you explain the strategy? Yeah, sure, why not? I will explain. स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है यार, अभी मैं कहाँ क्या बताऊँ. सी फर्स्टली ओवरव्यू देता हूँ. मार्केट जैसा ऊपर जाता है ना, तो माई एम इज़ टू, जब भी मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो माई एम इज़ टू टारगेट एंटर इन दिस रेंज. जब ये ऑर्डर ब्लॉक, ये स्विंग का ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो वेन एवर द प्राइस कम्स एंड टैप्स दिस ऑर्डर ब्लॉक, आई एम प्लानिंग टू एंटर हियर. इतना ही है मॉडल. बट व्हाट यू नीड इज ಲೆನ್ಸ್ ಕಾಟಿದಂತೆ 1971 ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೆನ್ಸ್ ಕಾಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೇಳ ಬಿಸಿ ಮಾತಾಡ. ಬಿಸಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ, ಸೋನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೋನುದಲ್ಲ ನಂದು ಆರ್ಡರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಡೋರ್ ಕಾಲ್ ಹಾಕು. 1 second. ओके, सो स्ट्रेटजी में हमको क्या चाहिए कि मार्केट जो भी मूवमेंट दे रहा है उसमें सिर्फ दो ही चीज़ है. एक हमको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम मार्क करेंगे द लास्ट कैंडल ऑफ द स्विंग, एंड वेन एवर द प्राइस कम्स बैक टू द ऑर्डर ब्लॉक, लिमिट ऑर्डर पे एंटर रखेंगे और ऐसा टारगेट करेंगे. दिस इज़ ऑल अबाउट द एंट्री. हाउ इट लुक्स लाइक इन द चार्ट वो दिखाता हूँ मैं. इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर बार ऑर्डर ब्लॉक पे टैप नहीं मिलता. सो वेन एवर द न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैपन्स, यू नीड टू शिफ्ट योर ऑर्डर ब्लॉक्स. इफ़ आई शो विथ एन एग्जाम्पल, आई कैन शो यू. लेट मी शो यू. अभी यहाँ पे हुआ नहीं है, कल एक बार हुआ था. वेर आई कैन शो यू. कहाँ पे दूँ. ये एक अच्छा स्विंग चाहिए स्ट्रक्चर. विल गो फॉर हायर टाइम फ्रेम सो दैट एक मूवमेंट दिखे. या सो हियर यू कैन सी मार्केट वॉज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट वॉज कमिंग डाउन साइड. ओके, मार्केट वॉज कमिंग डाउन साइड. ऐसा डाउन आया, फिर यहाँ से बुलिश जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे बुलिश जा रहा है. सो इट मीन्स वी गॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हियर. दिस वाज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ. सो व्हाट विल डू, विल मार्क द लास्ट कैंडल हियर, यह कैंडल. ठीक है. सो व्हेन प्राइस वेंट अप हियर एंड इट केम डाउन टू ऑर्डर ब्लॉक, ए वीक पे एंट्री होगा और फिर से ऊपर चला गया. सो हियर विल बी हैविंग आवर एंट्री समथिंग लाइक दिस, एंड हमको ये टारगेट मिल रहा है ऐसा स्विंग हाई का. सो दिस इज सिंपल. यू नीड अ हाई ब्रेक होना चाहिए स्विंग का, और बट द मेन थिंग इज यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस स्विंग्स. लाइक जो भी हमारा स्ट्रक्चर ऐसा गिर रहा है वो अच्छे जोन पे आना चाहिए. क्योंकि ये अच्छा जोन इसलिए है क्योंकि वन थिंग देखो, ये वाला बड़ा स्विंग का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था तो उसी के अंदर फॉर्म है. तो ऐसे जोन्स पे आपको जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर ब्लॉक वाला, उसको आपको ढूंढना है. इफ़ स्विंग, इफ आई टेकन अ ट्रेड ऑन द ऑर्डर ब्लॉक, अभी लिया है क्या? Did you take the trade right now? Which order block? May I know? अगर ये कौन से पेयर पे, in which pair and when did you take? Right now? If right now, मुझे बता दो कि which order block, like you can say the price. Okay. So if I show in 15 minute now, अगर 15 मिनट का चार्ट देखे तो now break of structure has happened. So the last candle is this one. So if the price taps again after going upside and comes taps again, this would be a good, how to show. Let me know. Wait, I'll put the chat. Tell me which pair, what's the price point, like where did you enter? You can say me which price. Okay, in gold. Oh, we are getting, hey, nice. Gold is giving a good structure. Oh, this is 15 minute. Okay, in 5 minute you can see here we have a market structure shift. Here we have another break of structure. So if we consider this break of structure, this
you'll get an order block here, something like this, and here is a weekend entry, but we'll take this, we don't consider this. For that, now the order block will be this. If in 5 minutes if you want an entry, we need a tap to this order block right now. 4330 entry. Yeah, that's good, bro. You have entered already. This is a order block. That's what I marked right now. 4330. Okay. If you have already entered, this is good, because if I see in 1 minute, if I show in 1 minute, if I consider this as a break of structure, then I am getting this as my order block, and you can see a weak entry. You can देखो यहाँ पे ये वाला वीक पैंट सा एंट्री बन रहा है, 1:2 ज़्यादा मिल रहा है. You can hold this until, if you are in trade, till this fairly gap fills. Oh, it's almost, it's filling. Oh, you have another. Okay, this is a supply zone for now. Okay, I think it has rejecting. It's correct or not? It's the same mark. Yeah. Order block is right, bro. Like, if it's on, as I shown, it's on 5 minute. No, in 1 minute that's correct one, but in 5 minute, the order block will actually change. The order block will become this much big. But if you go a bit precise, this is correct, and you should have taken entry on this step. If you have taken on this step, that's perfect one. See, you can see that wick, and it has went already. Where is the stop loss, brother? So usually in order block entry, the stop loss will be like, if you're entering, stop loss will be below the order block itself, a bit extra, because sometimes sweep may happen. So 1 minute early entry. Oh, that's crazy. Yeah, that's good. अच्छा, सही है. यूरोजी में प्राइस तो कुछ स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है यार. 5 मिनट में तो ऐसा सीधा बुलिश है. सी वीर वेटिंग फॉर यहाँ पे बेरिश जाने का प्राइस का. सी दिस इज द स्विंग हाई. इफ दिस स्विंग लो गेट्स ब्रोकन, वी कैन गेट एन एंट्री. अच्छा खासा एंट्री. विल वेट. सेल साइड एंट्री बनेगा. DXY देख लेते. DXY, व्हाट्स DXY डूइंग? DXY in 5 minute. ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है? We'll see. डेली में ऊपर फेरली गैप्स पड़े हैं. इट हैज़ टू गो. यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन भी लिया है. ओके, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड तो अपसाइड ही है. ये वाला हाई बचा है. यहाँ से पुल बैक भी होना है. ओके, इट मीन्स इफ इट स्टार्ट्स पुलिंग बैक फ्रॉम हियर. ये वाला लो था क्या? पुल बैक फ्रॉम हियर. यहाँ से पुल बैक अगर लेगा, साइड. हाँ, हेलो. हाँ ಎಲ್ಲಿ ಬತ್ತ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಮಳಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಸರಿ. ಆಯ್ತು, ಸರಿ. Bro, about daily bias. Okay, give me a minute. Okay, like I'll be back. I'll be explaining how you can do the daily bias. Just give me a minute. 5 minute आया. ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದು.
Okay, so are you there, VR gamer? If you're there, just put a comment. I'll explain you how to identify or analyze daily bias. My chair is okay. Okay. In 1 minute, for now, for the USD trade, we got a market structure shift, I think, to the bearish. Hope this goes bit so that more confirmation I can get. And after this, if the price goes somewhere here, this will be a good order block for me to be traded. Yeah, from here we are going sell side. But if I see in 5 minutes, we are getting say this is the swing low in 5 minutes, to be honest, to be precise. What we do, like, I don't like 1 minute entries, that's too risky. This is order block. There are so much of wicks here, man. एक अच्छा क्लोज मिलता तो अच्छा रहता. देखो प्रॉपर देखेंगे तो ये तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ है. एक और स्विंग बना के अगर नीचे जाने तो एक और स्विंग बना के ब्रेक करेगा. सो विल वेट फॉर दैट. ला 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 देखो ऐसे छोटे छोटे एंट्रीज देखो. यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है. ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट मॉडल है, सही बता रहा हूँ. देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, टैप होती है, एंट्री ले लो बस. बट वो ये थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूशन है. मतलब ये जो है बिगिनर्स के लिए प्रॉब्लम हुई है कि उनको एंट्री मॉडल समझ में नहीं आता कि कहाँ पे किस टाइप का एंट्री ले. तो ये मॉडल को अगर आप सीख लोगे तो इसको ट्राई करते 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 ना खुद अपना खुद का एक अलग सा मॉडल या कुछ भी बना सकते हो. दिस विल बी लाइक एक बेसिक. फॉर एग्जांपल अगर आपके लिए मैं मतलब अभी आपको मटका बनाना है, मतलब मिट्टी का, तो आपको अगर मैं स्टार्टिंग में एक इतना मिट्टी ला के दे दूँ तो आप उससे कुछ भी बना सकते हो अपना खुद का. तो सिमिलरली इफ़ यू लर्न दिस बेसिक मॉडल, इसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो. आप किस टाइप का कन्फर्मेशन चाहते हो वो सब आप अपना खुद का बना लोगे. बट बेसिक आप ये ट्राई कर सकते हो कि देखो देर आर काइंड लाइक डिफरेंट टाइप्स इन दिस ऑल्सो. लाइक लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक नहीं ट्रेड करते, ऐसे स्विंग मिलते है ये डालते हैं, मतलब अपना फेब वाला, और यहाँ पे रिजेक्शन पे लेते हैं. मतलब वो थोड़ा जल्दी मिल जाता है उसमें एंट्री, और स्टॉप लॉस पे वही रहता है. लेकिन ऑर्डर ब्लॉक इज़ लाइक ज़्यादा बड़ा ये मिलेगा. मेरे को ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं है नीचे की तरफ का, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक के टाइप में नहीं ले सकता. हम क्या करेंगे ना, वेट करेंगे. वैसे भी मैं 5 मिनट का लेता हूँ. और रे मैं हार गई, इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक. हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे इफ़ दिस लो ब्रेक्स. तब तक आई थिंक वी शुड वेट, बिकॉज इतना बुलिश भाई. आई मीन वी नीड स्ट्रक्चर गाइस, वी नीड स्ट्रक्चर. देखो ये देखो ऐसा स्विंग्स बनाना चाहिए. ये क्या है, लाइक व्हाट इज दिस बुलशिट. ये क्या है ऐसा ऊपर की तरफ सीधा एकदम डेड ब्लाइंड. 15 मिनट का विल सी, विल डू अ थिंग. फेब डालूंगा तो देख सकता हूँ. यहाँ तक तो आना चाहिए अपने इसको. ओके अभी डेली बायस बताता हूँ. सी डेली बायस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. डेली बायस ना कुछ नहीं, जो आप एनालिसिस करते हो उसको बड़े टाइम फ्रेम में करो, दैट्स इट. अभी मैं यूएसडी का अलग चार्ट ओपन कर रहा हूँ. डेली बायस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. सो आपको करना कुछ नहीं, पहले डेली के टाइम फ्रेम में जाओ. अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो तो डे ट्रेडिंग कैसे आपसे बताता हूँ. डेली टाइम फ्रेम में जाओगे, प्रीवियस डे का लो हाई मार्क करो, देखो क्या कर रहा है आज के प्राइस ने डेली हाई का हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है. तो इसका मतलब ओके अभी आपका बायस रहेगा बुलिश. ओके फिर आप
हावरली या 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाओ। मैं अभी हावर में गया क्योंकि 4 आवर का वैसे भी डेली के मतलब डेली कैसा है वैसा ही रहता है ऑलमोस्ट, दैट्स व्हाट, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। 4 कैंडल ही रहते ना, एक दिन को 4 कैंडल में डिवाइड कर लेते हैं, इसलिए हावर में जाओगे। हावरली में देख रहे हो मार्केट स्ट्रक्चर, देख रहे हो मार्केट स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है। स्विंग्स कैसे हैं, स्विंग्स देखो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आयत ऊपर, ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे नीचे होके अभी फिर ऊपर जा रहा है। मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो, क्योंकि देखो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मैं मार्क करूँगा, यू विल बी थिंकिंग मैं ये स्विंग को क्यों कंसिडर नहीं कर रहा। आप बोल सकते हो कि अरे यहाँ से ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, देखो फिर यहाँ नीचे। ये वाला जो अंदर का हुआ है ना, ये वाला, ये 1 आवर का स्विंग नहीं है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, दैट्स वाई मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा। वो कैसे पता चला मेरे को, इसके लिए मैं मार्क करूँगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड स्विंग्स। मैं करूँगा हाई का ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ, फिर मैं मार्क करूँगा स्विंग लो, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जो जोन में जो भी लोएस्ट स्विंग रहेगा उसको बोलते स्विंग लो अपना ट्रेंड का। फिर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ना कि यहाँ पे, इसलिए इस जोन के अंदर जो लोएस्ट पॉइंट है वो रहेगा यहाँ का, ये वाला, ठीक है। अभी क्या बचा है, नेक्स्ट हाई का ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ है। क्या ये पिछला वाला लो का ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर ये लो का ब्रेक नहीं हुआ है तो अभी भी मार्केट बुलिश ही रहेगा, क्योंकि पिछली बार उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ किया था। सो अभी के लिए भी वही मेरा बायस रहेगा। मतलब नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ अगर मेरे को सेल साइड जाना है तो इसका ब्रेक होना पड़ेगा, तब तक मेरा बायस बुलिश है, ठीक है। तो अभी के लिए बुलिश है। 1 आवर में अभी मेरा प्लान रहेगा कि हाँ बुलिश तो जाएगा, मतलब बायस बुलिश है, इसका मतलब मेरा ये हाई ब्रेक होने का मेरा बायस है, इसका हाई ब्रेक होना चाहिए। वो हावरली में मेरा दिन का बायस, जो आज का बायस रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। इसका मतलब मैं आज ट्राई करूँगा बुलिश ट्रेड लेने का, और मेरा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या है वो ये है। और आप ये भी देखो कि ऊपर की तरफ और क्या बचा है, मतलब टारगेट करने लायक। अगर आपका बायस बुलिश है, ठीक है, और आपको कुछ दिख रहा है, देखो अभी मेरा बायस भी बुलिश है, और उसके कंफर्मेशन के लिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे स्विंग हाइस पड़े हैं, क्योंकि मार्केट ने धीरे धीरे नीचे आ रहा था तो ऊपर की तरफ हाइस बना के आया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटीज़ है, ठीक है। तो ये लिक्विडिटीज़ मतलब यहाँ पे जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़े हैं, क्योंकि हंट होना है, तो इसका मतलब हाँ अभी तो मैं बुलिश ही जाऊँगा, मेरा बायस बुलिश ही। तो मैं सिर्फ ट्राई करूँगा कि मेरे को बुलिश ट्रेड मिले। मतलब देखो अभी मेरा बायस क्या है, आज का बायस हो गया बुलिश, बायस बुलिश, ठीक है। अभी ट्रेड कैसे लूँगा मैं, देखो ये बायस का हो गया, डेली बायस मेरा हो गया। अभी 15 मिनट में जाऊँगा तो फिर भी देख सकते हो, देखो 15 मिनट में क्या देख रहा हूँ। 15 मिनट में एक और कंफर्मेशन चाहिए, देखो यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, यहाँ पे देखो मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करो, जो SMC कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। फिर देखो अभी कैसा है ना स्विंग, ये नीचे आ रहा था स्विंग बना के, जो ये हाई को इसने ब्रेक कर दिया, मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ए हाई का भी ब्रेक कर दिया इसने, तो ये बुलिश ही है, ठीक है। तो अभी हमें एंट्री कहाँ पे लेना है कि अभी इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अभी इसका स्ट्रक्चर ऊपर नीचे ऊपर ऐसा है ना। अभी हमें बुलिश साइड एंट्री लेनी है, तो कहाँ पे लेनी है, ये जब नीचे आएगा और जब ऊपर की तरफ जाने लगेगा तब लेनी है, ठीक है। तो हमें अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें वेट करना है बुलिश ट्रेड के लिए। ये जब नीचे आए और नीचे आने के बाद कहीं भी अभी ऊपर का साइन दिखाएगा तब हम बुलिश के लिए जाएंगे, दैट्स ऑल। ये बुलिश का, ये अपना बायस बुलिश है, और बुलिश ट्रेड कहाँ लेंगे, कहीं पे इस जोन पे ऐसा कुछ, देखो क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जोन पड़ा है, यहाँ पे देखो ये अपना डिमांड जोन पड़ा है, तो यहाँ पे हम कुछ बुलिश का ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम जब भी वहाँ पे प्राइस जाएगा, ये हो गया अपना POI मार्क, तो ऐसे मार्क करने के बाद हम ट्राई करेंगे जब भी ये प्राइस यहाँ पे आएगा हम बुलिश का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ऐसा होता है हमारा बायस। अगर और एक और रहेगा कि अगर मैंने जैसे कि मैंने मार्क किया था स्विंग हाई स्विंग लो, अभी ये अपना स्विंग हाई है, ये अपना स्विंग लो है, ये अपना स्विंग लो नहीं है। अगर इसका ब्रेकआउट होगा फिर से, अगर प्राइस फिर से नीचे की तरफ आएगा, इसको ब्रेक करेगा ये लाइन को, हम इसको डाउन ट्रेंड कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्विंग लो कंफर्म नहीं हुआ है। ये स्विंग लो तभी कंफर्म होगा जब इसका हाई ब्रेक होने के बाद अगर ये आएगा तो वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। लेकिन अभी के लिए जो भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाला स्विंग लो है, जो ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था रिसेंटली, लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यही हुआ था,
तो इसका जो लो है ये ब्रेक होगा ना तभी मैं बेरिश जाऊँगा, तब तक के लिए मेरा बायस बुलिश है। दिस इज़ हाउ यू थिंक ऑफ अ बायस। तो अभी के लिए मेरा भी बायस बुलिश है, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ मेरे को पुल बैक मिले, ठीक है। तो देखते हैं, देखो 4 आवर में क्या हो रहा है, 4 आवर में क्या हो रहा है, 4 आवर में मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी पुल बैक के लिए नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे एक है कि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे बेरिश ट्रेड ले सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि हाँ मैं बेरिश, यहाँ पे अभी मेरा बायस बेरिश है, जब ये मार्केट यहाँ तक आएगा यहाँ से मेरा बायस फिर से बुलिश हो जाएगा। तो ऐसा भी थिंक कर सकते हो। जो भी स्कैल्पिंग करते हो ऐसा ही करते हो, उनका मतलब डेली बायस नहीं रहता, उनका ऐसा रहता है कि 5-10 मतलब घंटे के हिसाब से बायस चेंज होता है, क्योंकि उनको जल्दी एग्जीक्यूशन करना है ना। हर बार देखो अभी दिन का अभी पूरा बुलिश बायस है और सारे मार्केट नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो यू कैन बी ट्रेडिंग देयर। सो बायस चेंज होते रहता है उनके लिए। वो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं। देखो अभी मार्केट क्या कर रहा है, ये वाला, इसको मैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं किया, मतलब अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अप ट्रेंड को नहीं, अप ट्रेंड जो जा रहा था वो उसने लो ब्रेक किया, बट इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कंसिडर किया था, क्योंकि द रीज़न इज़ यहाँ पे सिर्फ विक्स बने थे, इसलिए ये प्रॉपर नहीं है। अगर मैं इसको कंसिडर करता ब्रेकअप स्ट्रक्चर और अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता ऐसा कुछ, तो इसके टैप पे यहाँ पे एंट्री बनता है एक्चुअली, बट मैंने इसको कंसिडर नहीं किया, क्योंकि देखो दिस इज़ अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वी कैन से, बट स्टिल वो कंफर्म नहीं है ना। अच्छा है, एंड इवन 5 मिनट में कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा मेरे को, क्योंकि मैं 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं ये वाले लो का वेट कर रहा हूँ। ये वाले लो का, ये लो का ब्रेक होगा ना तब मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म हो जाएगा। तब तक के लिए आई विल बी वेटिंग फॉर दिस। एंड इसका प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली ये बनेगा, ये बोला, बट ये बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसका नेक्स्ट जो ये कैंडल है इसको मार किया था, एंड देखा कि जो नेक्स्ट वाला कैंडल है उस पर टैप हुआ है। लेट इट बी। अभी इसका लो फिर से ब्रेक होगा, लो ब्रेक होगा तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो जाएगा। ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ से ट्रेंड लो है, बट वो 1 मिनट में है, क्योंकि हम ट्रेड 5 मिनट में ले रहे हैं, तो वी वोंट कंसिडर दैट। कुछ पीपल क्या करते हैं, वो वीक नहीं है, बॉडी से मार्क करते हैं। अगर बॉडी से मार्क करेंगे तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, लेकिन मेरे बैक टेस्टिंग के हिसाब से मेरे को मतलब मैंने उतना ज़्यादा उसको ट्राई नहीं किया, तो मेरा उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, दैट्स ऑल। मॉडल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन लोगों को जो ट्रेड करना आता है यार, और विच दे आर मोर कंफर्टेबल विथ, वो अगर वही करे तो अच्छा है, रैदर देन किसी और का बताया हुआ। जो भी नया हो स्ट्रीम पे सब्सक्राइब करो। टाना टान टाना टान टान टान। कल मैंने पूरा लगाया था ये सब, आज अभी मेरा फ्लिपकार्ट से बुक्स वगैरह आने और भी ज़्यादा शेल्फ वगैरह पूरा डेकोरेट करना है लाइट्स वगैरह डाल के, तब स्ट्रीम करने में मज़ा आएगा। आई एम प्रॉफिटेबल, अभी प्रॉफिटेबल तो मतलब उतना पैसा कुछ नहीं बना, लेकिन अभी हाँ अभी 2 महीने से चल रहा है, मतलब इट्स बीन अभी जो ट्रैक पे आया है बस। ऐसा नहीं कि हम प्रॉफिटेबल बोले तो मतलब अच्छा खासा पैसा कमाना है, अच्छा खासा पैसा नहीं, अच्छा खासा पैसा कमाया होता तो मैं दुबई जाता। लेकिन हाँ अभी गेम में दैट्स व्हाट यू कैन से, गेम में सर्वाइव कर रहा हूँ, चल रहा है। ऐसा नहीं कि स्ट्रीक में लूजिंग, पैसा बहुत गवाया, कुछ नहीं हुआ है अभी तक, मतलब इट्स लाइक जो हुआ था वो सब हो गया था। सो अभी जो सब रिकवर हुआ है, सो दैट्स व्हाट, अभी अच्छे टाइम चल रहा है। सो यू कैन से लाइक ओ, एंड दैट्स वो भी 1-2-3 महीने से अभी यू कैन से ट्रैक पे, मतलब वो ग्रोथ के इसमें अभी 1 साल से। हाउ मच टाइम यूर ट्रेडिंग इन, लाइक ट्रेडिंग तो 3-4 साल पहले ही शुरू किया है अपने इसमें इंडियन मार्केट में, बट फॉरेक्स में 1 ईयर। फॉरेक्स टाइम लगता है ब्रो, बहुत टाइम लगता है। लाइक आई वुड प्रीफर सब लोगों को कि अगर आप छोटे बच्चे हो, नहीं मतलब जो भी इफ़ देर आर यंगस्टर्स लाइक अभी 10th में 12th में, गाइस स्टार्ट नाउ इटसेल्फ, क्योंकि व्हेन यू विल बी एट द एज ऑफ 20-21 यू विल बी मेकिंग समथिंग क्रेजी शिट्स। अभी ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेगा क्या? इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता तो दिस वुड हैव बीन एन ऑर्डर ब्लॉक, बट दैट डिडंट हैपन,
and even this also is not a proper breakout structure. Even if this one also was a good breakout structure ना, this order block could have been traded, बट यहाँ पे कुछ नहीं हुआ. सो दिस इज़ वाई देखो ऐसा कंफर्मेशन अगर रखोगे सो दैट्स ऐसी अभी अपना बुलिश ही है क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही नहीं हुआ. दिस लो वाज टू बी ब्रोकन प्रॉपर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ही नहीं. इफ ओवरऑल आई ड्रॉ दिस इट्स लाइक अप डाउन अप डाउन अप, दैट्स व्हाट. और ऑल्सो यू कैन कंसिडर दिस स्विंग ऑल्सो, ये भी स्विंग ठीक ही है, इट्स नॉट बैड. अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप. जो ये अंदर वाला स्विंग है ना, दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज सी आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वी कंसिडर अ स्विंग, so that would be this one swing, so we can ignore this. This will be an internal structure, and this low was proper. This low didn't break this low, this low just swept that. So अगर ये break होता तो we should have expected some downside move. We'll see. अभी इसका sweep हुआ है ऊपर की तरफ ये swing का. Hopefully we can get something bullish bearish. स्वीप होने के बाद देखो अभी वी डोंट नीड दिस स्विंग लो टू बी ब्रोकन फॉर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट. द गुड थिंग इज़ जब ऐसे हाई ब्रेक होता है तो नाउ अभी इसका भी लो ब्रेक होगा ना, तब भी हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसिडर कर सकते हैं, बट उसको ब्रेक होना पड़ेगा पहले. वेट ये वीक हो रहा है, वी गॉट अ वीक, वी नीड समथिंग. भाई ऊपर थोड़ा क्लोज करे फिर है. ये 1 मिनट का है, 1 मिनट बहुत अनबायस्ड है. 5 मिनट में तो बॉडी क्लोज है. Yeah, we need this low to be broken. I have started from 10th class. Oh, too good bro. That's what. जितना यंग मतलब यंग एज में स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि ट्रेडिंग में टाइम ज़्यादा लगता है. एंड इफ यू स्टार्ट अर्ली एक अच्छे टाइम में ना बहुत अच्छा मनी कमा सकते हो, क्योंकि आफ्टर ट्रेडिंग इज समथिंग लाइक अ करियर और सम लाइक ऑफ अ बिजनेस, और यू नो इट्स लाइक अ जॉब वेयर आफ्टर व्हेन यू आर कुछ एज के बाद 20-25 के बाद you can't be giving, you need like you need to spend lots of time on that. And as in India it's not been seen as a practical job. It's very hard to survive in society and learn trading being 20-25, or because people wanting you to be doing job and all, and you are wasting your time on market. So उसमें क्या होता है कि लोगों को वही है कि उनका ये मतलब माइंडसेट ऐसा है, यू कैंट बी सबके ताने सुनने पड़ते हैं. एवरीवन विल बी लाइक व्हाट आर यू डूइंग, सो फिर शाम तक लैपटॉप में कंप्यूटर में हो. ऐसा जब यंग एज में रहता है ना तब थोड़ा टाइम रहता है. इवन इफ यू थिंक लाइक इन यंग एज अभी पढ़ाई चल रही है, कुछ टाइम के बाद फ्रीडम, नो गाइस, वही पढ़ाई के टाइम में ज़्यादा फ्री है, सही बताता हूँ. आर यू स्टडी? हाँ नाउ मेरा पीजी चल रहा है, MBA. पीजी हो जाएगा, अभी लास्ट 1 साल बचा है. अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर टू द बुल, ये अभी थोड़ा सा एक अच्छा ब्रेक मतलब ये मिला अच्छा वाला स्ट्रक्चर. दिस ऑर्डर ब्लॉक कैन बी ट्रेडेड नाउ, बट या आई एम स्टिल बेरिश, तो आई डोंट वांट दिस. अगर बुलिश जाना है तो मैं कहीं पे नीचे पे जाऊंगा, यहाँ पे क्यों जाऊंगा? द मेन थिंग बिकॉज 5 मिनट ब्रेकअप स्ट्रक्चर गाइस, ये 5 मिनट ब्रेकअप स्ट्रक्चर मेरे को बहुत डर आ रहा है. विल यू डू गोल्ड इन एनवाई सेशन? I don't trade gold. I trade only EURUSD right now. I was trading gold, but I don't trade now. क्योंकि gold people don't understand. Like gold is देखो सब you can say if 100 people are trading on gold, only 20 people may do profits in gold, and बाकी के 80 लोग लॉस में जाते हैं. And people think okay gold is profitable because वो 20 बंदे जो प्रॉफिट बना रहे हैं वो सबको दिखा रहे हैं. That's what. That's very overrated pair I could say. उतना वॉल्यूम क्यों चाहिए आपको बनाना है करोड़ों में? यू डोंट नीड टू मेक अभी एक ही दिन में किसको बनना है रिच. यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस. सो आई वुड से एक अच्छे पेयर लो जो भी मतलब जो एकदम स्टेबल है, उसमें ज़्यादा स्प्रेड्स नहीं है. सो आई ओनली ट्रेड यूएसडी. आई लाइक यूएसडी, उसका स्ट्रक्चर क्लीन है. देखो ब्रेकअप स्ट्रक्चर अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा है. गोल्ड में ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद भी वो वापस उठ जाता है. प्राइस एक्शन बहुत ही वॉलेटाइल है. यू कैन ट्रेड इंस्टेड EURUSD JBPUSD, क्योंकि वॉल्यूम भी सेम टाइप का है, मूवमेंट भी ऑलमोस्ट सेम आता है, एंड प्राइस एक्शन बहुत अच्छा रेस्पेक्ट करता है. एंड इफ़ यू वांट सम स्लो यू कैन गो फॉर USD JPY.
दिस ऑल्सो फॉलोज प्राइस एक्शन वेरी वेल. इसमें आपको कुछ ऑर्डर ब्लॉक एंट्री कुछ भी नहीं चाहिए, सीधा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे एंट्री कर लोगे ना, उसमें भी मूवमेंट मिल जाता है. इसमें कुछ ओवर कॉम्प्लिकेट करने वाली कुछ नहीं है जापानी सीन में. लेकिन वही है, अगर एक बार मार्केट गिरने लगा या उठने लगा तो एक ही ट्रेंड में रहेगा, तो आपको शिफ्ट जो मिलेगा ना वो बहुत लेट मिलता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट गिर रहा है तो इसको अभी फिर से बुलिश जाने में बहुत टाइम लगेगा. मतलब देखो पीपल वुड देखो यहाँ पे यहाँ तक देखो जो भी बीच में एंट्री करते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन मैं ट्रेंड के साथ एंट्री नहीं करता, मैं ट्रेंड रिवर्सल एंट्री करता हूँ. सो इफ़ मार्केट इज़ गोइंग अप साइड, हाँ आई नो आई डोंट कम लाइव डेली, बट अभी कल से मैं डेली आ रहा हूँ. आई केम यस्टरडे 2 टाइम लाइव, टुडे मे बी अभी लाइव आने के बाद शाम को फिर से आऊँगा. आई वांट, अगर पीपल वांट टू सी मी, पीपल वांट टू, मैं मेरा एनालिसिस चाहिए उनको, मेरे से ट्रेड्स लेना है, तो आई कैन कम. बट आई डोंट हैव अ गुड बेस ऑफ पीपल हु वांट टू लर्न. लाइक इंस्टाग्राम पे है, सबको मेरी स्ट्रेटजी चाहिए, सब आते हैं कमेंट करते स्ट्रेटजी लेके चले जाते हैं. दैट्स व्हाट पीपल वांट मी फॉर. आई वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी वेयर आई कैन टीच पीपल ट्रेडिंग, कैन ट्रेड टुगेदर. बट yeah, दैट्स अ सैड थिंग. बट नो वरीज. अभी वही आई बी शेयरिंग ऑल माई एक्सपीरियंसेस. मेरा क्या चाहता है, मैं तो फ्री में से सीधे बताते रहता हूँ. लाइव में तो फ्री ही आता ना. एंड या अभी देखो, अभी जैसे कि अभी जापानी सेन गिर रहा है, अभी उठने, अभी यहाँ पे कहीं रिवर्सल मिलेगा तो अच्छी बात है. यहाँ पे जो एंटर करेगा तो लंबा होल्ड कर सकते हैं. जापानी सेन इज दैट्स व्हाई आई लाइक. बट आई डोंट ट्रेड देयर बिकॉज वो उसमें मतलब इसमें बहुत पेशेंस का काम है. जापानी सेन में ट्रेड ही नहीं मिलता. एंड मीन वाइल इन गोल्ड एंड ऑल आपको ट्रेड मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे पेशेंस का काम है, क्योंकि आपको प्रॉपर ट्रेड आइडेंटिफाई करना है. यूरो इज जस्ट लाइक बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. सो दैट्स व्हाट. यूरो भाई जिंदाबाद. टाना टाना. मेरे को रूम में डेकोरेट करना है बहुत लाइट्स वगैरह डाल के. कल किया ये सब ऊपर यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड स्टिकर डाला. प्रो मेक अ कम्युनिटी. आई हैव अ कम्युनिटी, यू कैन जॉइन मी. डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आई हैव अभी टेलीग्राम पे 220 230 है, और यूट्यूब डिस्कॉर्ड पे भी है. गो टू या मैं डिस्कॉर्ड में लाइव आता था. आई लाइक आई केम सम लाइक इन बिटवीन 2-3 टाइम्स ट्रेड लिया साथ में, मतलब बैठ के. बट अभी यूट्यूब पे आ रहा हूँ. दैट्स व्हाट. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, डिस्कॉर्ड का लिंक है. सो यू कैन जॉइन. डिस्कॉर्ड लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन ब्रो, यू कैन चेक. वहाँ पे एक इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पे सारे लिंक्स एक साथ मिल जाएंगे. ओके. टेंटन. अभी एक बार यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल जाए, देखते हैं. हम विल डू अ थिंग. हम इसमें फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हैं ना गोल्ड में, स्कैल्प जैसा. मैं यहाँ पे ट्रेड्स दे सकता हूँ. प्रॉब्लम है कि आई डोंट वांट एनी प्रॉफर्म ट्रेडर टू ट्रेड विथ मी, क्योंकि इफ़ आई एम गिविंग नो स्कैल्पिंग एंड इमीडिएट ट्रेड्स एंड ऑल. एंड एक और चीज़ है कि लेटेंसी. भाई जब मैं ये बता रहा हूँ ना आपको, 5 सेकेंड आई मीन 1-2 मिनट बाद आपको वो रिसीव होगा. तो इफ़ आई गिव अ ट्रेड नाउ, यू विल बी मिसिंग दैट मूव ऑल्सो. एंड लेट एंट्री से आप लॉस भी कर सकते हो, क्योंकि या दैट्स व्हाट. सी ब्रेकआउट गोल्ड में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अपसाइड, वी कट एन ऑर्डर ब्लॉक टैप. यहाँ पे एंट्री जा रहा है. वी गॉट अनदर. यहाँ पे नहीं हुआ, स्वीप हुआ था. इतना ಹಲೋ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ? ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಈಗ? ಫೆಬ್ರಿ ಅಲ್ಲ?
Bro, Discord link is expected. Wait, let me share a valid link. सॉरी गाइस, एक ऑर्डर था लेंस कार्ड का, तो इसके लिए जाना पड़ा. Invite to serve. I'll update in the description. Discord link separate से डालता हूँ. 1 second. Stream settings, edit. What if I put it in chat? Bro, are you from BNL? BNL Bangalore? Yeah, Bangalore. I'm not from Bangalore. I'm from Karnataka. In Mangalore, Udupi, Mangalore. Near beach side, beach wale. Coastal area, guys. Okay, I have like comments. I have shared my Discord link. You can join. पिन कर दिया था. पिन हुआ है क्या वो? I hope it's pinned. If you can't access open panel. गंदा लगता है यार. Shit. Yeah. टिन मार्केट क्या कर रहा है? रिजेक्ट करेगा क्या यहाँ से? कितना दे सकता है? ऊपर फेयर क्या है 1 मिनट का? इसका आधा तक तो जाएगा. 1:2 कितना दे रहा है? मैं यूजुअली 1:1.5 टारगेट करता हूँ, बट इफ़ विल सी 1:2 तक का क्या करेगा. जा तो रहा है. ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं स्ट्रैटेजी वर्क करेगा कि नहीं, क्योंकि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ था. सो वी वोंट बी टारगेटिंग दिस ऑर्डर ब्लॉक, और एल्स यही ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री बनता. बट नो, बिकॉज ये वाला हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये स्वीप हुआ था. ओह नाइस. हाँ देखो, दिस इज़ व्हाट आई इमीडिएट मूवमेंट. देखो कितना दिया है, दे रहा है. विल सी, विल बी ऑर्डर ब्लॉक. अभी इसमें बाद में आके देखते क्या होता है. बेंगलुरु हो रहा साइन के लिए. आई एम फ्रॉम बेंगलुरु. यस, नमस्कार ब्रो. ओके, वी हैड अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर टू द अपसाइड and it's the last candle or the block candle will be this. Where is gold? Gold देगा तो 1:2 तो देगा. देखो प्योर मॉडल है मेरा. दिस इज व्हाट आई टॉक अबाउट मॉडल. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल. मार्केट इज बुलिश, वी गॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, we have an order block पे tap, and we got 1:2, 1:1.5 देख रहा था, but I didn't enter. This is how my model looks like, I'm saying. ठीक है, यहाँ पे we didn't get a break of structure, so this order block was tradable. If you got a break of structure again, this order block is invalid now for trade. We should mark the next order block, but that's cool. Forward testing, this is how you do forward testing. Like while watching the market, you are trying to take trades. You're not trading, but I was saying something. We'll see. 1:3 देखता क्या. लाइक यहाँ पे जैसे कि देखो, यूजुअली ये हाई पे ब्रेक होना पड़ेगा इसको मार्केट, क्योंकि बुलिश है. बुलिश में हाई ब्रेक होता है. लेकिन विल सी क्या फेयर अब तक जाएगा या यहीं से रिवर्स करेगा. ओह, दिस जंपिंग. लेट इट बी. What is like, I want to take trade in EURUSD, and EURUSD is like, okay, in 5 minutes do we have anything? 5 minute break of structure. This is the 5 minute order block on which the tap has happened. So here this is a bullish trade actually till this high.
यहाँ से जा रहा है रिजेक्ट करके, बट वी एज आई सेड आई वांट अ पुल बैक, so then I'll go for bullish. Until that I'll be trying to go bearish. Even if this trade plays out, I don't mind because bias, bias is important. What did gold do? Gold is going. This was a 1 minute entry by the way. So I'm like जो भी लाइव में है उनको मैं सिखा रहा हूँ. देखो जैसे कि बोला था फेयर वाले गैप पूरा जाएगा. देखो फेयर वाले गैप तक विक किया है इसने 1:3. नाइस. फेयर वाले गैप कहाँ तक है? ये वाला पूरा देखते हैं. प्रॉपर एड टू एड यहाँ तक है. सो यहाँ पे थोड़ा बचा है ऊपर. सो विल एक्सटेंड दिस. देखते हैं कि क्या फेयर वाले गैप पूरा खाता है कि नहीं. बट या इफ एनीवन, यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला है बट यूरोएसडी का कोई देख सकता है. इफ एनीवन वांट्स, सी यूरोएसडी इज गोइंग अपसाइड. ये स्विंग हाई का देखते हैं. यहाँ पे फेयर वाले गैप है. देखो फेयर वाले गैप का देखते हैं. टू बी प्रिसाइज यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है. दिस वाज एन ऑर्डर ब्लॉक ये, बट वी आर looking in 5 minute, right? So we'll be marking only 5 minute order blocks. Let's see, can this 5 minute trade play out? See, I'll be looking into this type of trades because it builds confidence rather than back testing a data. If you live market में अगर मैं ऐसा back test करूँगा तो you know what happens is I'll be getting a confidence like हाँ, even if I'm in live I can take trades. And देखो अगर मैं randomly लिया होता तो 2 ट्रेड में अभी 2 प्रॉफिट भी मिलते. Oh this, see this what happened in gold. What happened in gold? As I said, ये हाई ब्रेक होना है. ठीक है, ऑफ कोर्स होना है. फेयर वाले कैप तो फिल हो चुका है. 1:3 दे चुका है. 1:4 देता है कि नहीं. We saw this trade somewhere here. Even if we entered in the middle also, we could have got 1:1.5 also. But we'll see this only. This is the power of market structure, guys. ICT जो फेयर वाले कैप है, सब कॉन्सेप्ट्स हैं to improve the probability or confirmations लेने के लिए. But the main thing you need to trade or you need to have of idea is that it's about market structure. That's because वो सबसे ज़्यादा contribute करता है. दे ब्रेक दे कोई ना. कितना दे? 1:4 1:4 तो मिल चुका है. I'm seeing for the high. USD is also going. Come on. 1:1 दे चुका है. If you are managing your trades, you can always go to break even when it's 1:1. Okay, but we'll see because we are back testing. La 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 la. Whoa. OP. गोल्ड का छोड़, अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया होता तो यू कुड हैव बुक दिस गाइस. दैट्स व्हाट डिले होता ना, लाइव में डिले रहता है. प्रॉब्लम व्हाट वी कैन डू इज, मैं लाइव भी आऊँगा, डिस्कॉर्ड पे भी आऊँगा. आई मेक अ चैनल so that I can give only trades, premium channel, only trades as a live. See, this was a clear 1:1.5. gold was a bit late. See, ये प्रे होना है, इसको होना है. मार्केट बुलिश है. यहाँ पे के रिजेक्ट करेगा तो कहाँ से करेगा? देखो रिजेक्शन जोन, मार्केट बुलिश है तो ये रिजेक्शन हो चुका है यहाँ से, इस जोन से. I hate this shit, man. Is 1 minute or 3 minute or 5 minute blocks are that much powerful? See, if you are trading in 1 minute, then use 1 minute order block. If you are trading in 5 minutes, then use 5 minute order block. That's it. If I go for 1 minute now, the order block would have been this, and in 1 minute I didn't get an entry only. So as I'm looking, I got this breakout structure. I saw this breakout structure in 5 minutes. I'm marking the 5 minute order block. This one, it's very big, but see, still it gives. See, I'm not targeting too much. I'm targeting only 1:1.5. That's all. So that's what. See, we got 2 कैंडल में अभी हिट होने वाला है.
So how much you need? Like 10 minutes? Can't take you 10 minutes. See, gold on तो एकदम OP वाला दे दिया. Should I put this in story? देखो did the price एक बार भी नीचे stop loss की तरफ नहीं गया. It just tapped and it just started going up. But the problem is I didn't take entry now. That's a sad thing. When I get something like this, अभी ऐसा कुछ move है, and if I'm trading a live account rather than prop firm, we can easily trail this. Like क्योंकि देखो 1:1.5 का हो गया जो भी हमारा था, फिर फेयरली गैप पड़ा तो you can next target till फेयरली गैप, and if you want to trail then you can go to this highs, something like that. But we'll keep 1:5 because we are back testing this in the live market. Yes, of course, put a story, bro. Yeah, I'm thinking दो फोटो निकाल के डाल दूँ live trade. That's what. रहने देते हैं, कोई ना. So this is how we identified order block trades. This is simple. देखो, to the people who are in live, and to be honest, on this model, we have two types. Okay, either you can, what the fuck is this? Start. देखो what एकदम से वॉल्यूम जंप हो रहा है इसमें, एकदम से नीचे एकदम से ऊपर जा रहा है. Let it be, let it play. What I was saying, like इस मॉडल में two types है. One, the general. You can use this, general. What happens in general is, general में क्या होता है कि you take every break of structure and order block, ignoring daily bias or HTF bias. This is like general one, and this is profitable. Of course you can make profits in this, like, but what happens is you need to trade lots, like you may need to take 10 to 20 trades as such, but at the end of all those trades you will be profitable. And I would suggest this for the people who are using their own funds. You can track every break of structure and whenever the break of order block taps, because you may get in 10 or 15 entries a day in 185 say, and you may still be profitable in that by targeting 1:5 or 1:1.5, 1:2 also. Another is conservative approach. Conservative. What happens in this is take less trades of high quality. You can only, if you're trading in prop firms, and you cannot over trade because that will lead to breach of your account. In that case you can conservatively trade, like only take the same order block bias, like order block tap on after break of structure only when there is a good high time frame bias, a good zone, So this is what I am doing, conservative approach, because I'm trading in prop firm. If I had my personal funds of 10-20 lakhs, I would have gone for this approach, and this gave TP. Will it break the high? Let's see. So that's what. अगर मेरे पास पैसा होता ज़्यादा, क्या करता भाई, सारे ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेता मैं एक मिनट में, दिन में डबल कर देता. लेकिन वही प्रॉप फर्म में डिसिप्लिन चाहिए. इसे जो मैं बताया है अभी, जनरल अप्रोच, इट्स काइंड ऑफ अ गैम्बलिंग यू कैन से. ओके, सो दैट्स व्हाट. सो द प्राइस इज रिजेक्टिंग फ्रॉम दिस हाइस. यहाँ पर रिलेटिवली हाइस पड़े हैं जिसका स्वीप भी हुआ है. आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू गो बेरिश फ्रॉम हियर, बट यहाँ पे एंट्री मिला है, बुरा लग रहा है. नहीं लिया. गोल्ड पे नहीं लेता हूँ, बट यूरोएसडी पे मिला है तो वो बुरा लग रहा है कि यहाँ पे नहीं लिया मैंने. बट प्रॉब्लम इस 1 मिनट में मिला है ना, नहीं 5 मिनट में मिला एक्चुअली. ये वाला ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट वाला है, बट ये हम वेट कर रहे हैं कि कुछ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं, मतलब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो और मार्केट बेरिश चला जाए. लेकिन या दिस इज़ नॉट गिविंग 1:2. कितना अभी 1-2 मिनट बचा है कैंडल क्लोज के लिए. विल सी, we'll let this trade play out and देखते क्या मिलता है. बाय द वे कल हमने 3000 फॉलोअर्स कंप्लीट किए भाई. लाइक ये अभी लाइक इट्स बीन ओनली 14 डेज. दिस अगस्त 14, प्रॉपर अगस्त 1 से स्टार्ट किया था सीरियसली इस अकाउंट को, एंड इट्स अगस्त 14 एंड
14 days में we have reached 3000 followers, and that's too big achievement for me. Like I can't even express in my like कैसे बता, like in 14 days bro I dreamt of this, and we got like 14 days में 3k followers. That's crazy. Actually we hit 2k followers in 4 days itself. It took lot for 3000 because मैंने कंटेंट थोड़ा उधर इधर हो गया. आज से फिर से एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट पोस्ट करूँगा. आई नीड टू रीच 5k विद इन दिस मंथ. 5k within this month, we need that. Dun. Wait, कट रहा है क्या यार ऊपर? This is not giving, I think. We'll see a candle close होने के बाद. But as our target 1:1.5, it has given. It is not giving 1:2. So this what happens, like if you're trading this model now, for the people who are in live, I would like to say, जब तक मैं वीडियो नहीं बना के डालता तब तक के लिए I was thinking like to put a 15-minute or 10-minute video on whole model and strategy, लेकिन बाकी लोगों के लिए बता देता हूँ कि one is you can either target 1:1. Okay, 1:1 टारगेट करो, सीधा लेके जाओ, जिसमें प्रॉफिट है लॉस. You can target 1:1.5 also, जैसा कि मैं लेता हूँ, प्रॉफिट है लॉस, that's all. Or else you can go to 1:2. In 1:2 what you need to do is, like the moment it touches the 1:1 point, जैसे 1:1 की तरफ जाएगा, ब्रेक इवन पे डाल दो और रख लो. देख फॉर एग्जांपल व्हेन द प्राइस वेंट हियर 1:1 यहाँ तक आया ना, तो जैसे मैंने सीधा ब्रेक इवन कर दिया स्टॉप लॉस को. सो नाउ इट हैज़ टू आइदर गो टू द प्रॉफिट, लाइक या तो ये डबल होगा या तो ज़ीरो पे होगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस. बट उस अप्रोच में यू कैन यूज़ दिस अप्रोच इफ़ यू आर डूइंग द जनरल थिंग व्हाट आई सेड, 10-20 ट्रेड ले लो दिन में, अपना खुद का अकाउंट है. बट इफ़ इट्स परफॉर्म ना, इट्स बेटर टू नॉट डू दैट, बिकॉज कभी कभी क्या होता है सारे, क्योंकि सारे ट्रेड 1:1.5 से रिवर्स हो रहे हैं, तो यू विल बी टेकिंग ट्रेड्स बट प्रॉफिट नहीं आ रहे क्योंकि सारे ब्रेक इवन जा रहे हैं, एंड उसके ऊपर उल्टा चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, यू नो, कमीशन और व्हाट, यू नो, ब्रोकरेज चार्ज वैसा. सो दैट्स व्हाट. वही है कि अगर मॉडल अच्छा है तो ले लो 1:1 1:1.5 ले लो, निकल लो घर से, मतलब ट्रेड के बाहर निकल जाओ, क्या प्रॉब्लम है ना. That's what. दिल संभलना जरा. If anyone new is in the live stream, subscribe and follow. अभी क्या करूँ, मतलब what can I do in my life? एक ट्रेड ही ले सकता हूँ एक मिनट में. 1 मिनट में क्या है, देखो 1 मिनट में क्या हो रहा है. अभी देखो मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ पे, देखो ये वाला हाई बना है और दिस लो इज़ नॉट ब्रोकन, सो दिस इज़ द लो. नो, दिस इज़ नॉट द लो. हाँ, डोंट मेक अ मिस्टेक ऑफ कंसिडरिंग दिस एज अ लो, ओके, बिकॉज ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ है. ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद होता है, तब तक के लिए यही लो बढ़ा है अभी भी. अगर इसका ब्रेक होगा तो द मार्केट इज बेरिश. I'm waiting for this to go to 1:2 to see the accuracy of this trade in live. क्योंकि see the strategy may be 100% right, okay, the strategy may have a win rate of 100%, accuracy may be top notch, but it depends on how you are using that. जैसे कि अभी मैं आपको एकदम तगड़ा वाला स्नाइपर दे सकता हूँ, जो जहाँ पे भी आप एम करोगे, मार करके एकदम शॉट लोगे, it will hit the target 100%, but it still depends on the user how he uses that. That's what strategy may be 100%, but वो depend करता है कि बंदा कैसे यूज़ कर रहा है. 2:30. What a boring day, man. आपका भी resort. जा दे दे 1:2. स्क्रीनशॉट डाल के डाल देता हूँ लाइव में. ड्यू टू एंगर ट्रेडिंग इट्स अ बिच फंड इन पिप्स अकाउंट ब्रो, आई कांट एबल टू कंट्रोल साइकोलॉजी. ओके, आई लाइक दिस थिंग, लाइक मतलब जो भी साइकोलॉजी ब्रेक करते हैं उनको सिखाना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आई हैव फाउंड अ कोड और यू नो आई हैव क्रैक्ड, यू कैन से, क्योंकि मुझे अभी होता ही नहीं है दैट फील. मैं नो कितने साइज था अकाउंट का. सी एंगर द थिंग इज ना, इवन
I breach my account purposely due to anger. See, for that you can do only one thing. The best thing you can do is take one trade a day. When I started taking one trade a day, 5k two step, array shit. Yeah, like the best thing you can do is do this, bro. One trade a day. The moment I started doing one trade a day, I have no option to show anger only. Like how, like if I'm not trading again on that account, how can I show anger? That's what. Fix this rule. Like consider like मैं वही रहता हूँ. If I don't do this, I'm gay. मैंने Instagram पे भी डाला है. Like if I don't follow my rules, भी trade कर रहा हूँ. I actually did a first loss on that account, first trade only. So that's what. If you know follow these rules. I posted on Instagram. Insta में डाला था मैंने. अगर मैं rules break करता तो मैं gay हूँ. Bro, I don't want to prove myself as gay anymore. So that's what. You should have that self control. And one thing is never get obsessed with the trading. Okay, never get obsessed with the trading. Like what I mean is, like if you are loving this, like if you are loving the game a lot of, like you should love the process, you should love the struggle, whatever you are doing, but don't love the trading, like taking trades and winning the trades. Don't love that thing. Love the process. Like even if it's losing or winning, love that. Don't love only winning. Because once you get obsessed with this thing, now what happens is जब lose होते तो emotionally hurt करते हैं. And what I do is I don't, even the people make take these decisions और psychology खराब होता है when you are spending too much time. Like for example, if you are loving any one person, okay, and आप दिन भर उसी के पीछे, दिन भर सुबह से शाम तक, ठीक है, बाद में पता चलता है वो किसी और के साथ जा रही है. तो what happens is you'll be feeling very sad. If you think like मिलेगी तो मिलेगी, नहीं तो like have that mindset. Like even in trading, don't be obsessed. सुबह से शाम तक टाइम मत दो. Give 1 to 2 hour. Okay, like if you are giving only 1 to 2 hour and still even if you lose also ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि you didn't invest that much of what you can say, उतना hard work नहीं किया. क्योंकि there is two type of things. One is smart work and hard work. Everyone knows. For a work, if you are putting a lot of hard work and you lose ना, you will be feeling very much sad. But if you are for a work, if you are not putting much hard work, but only you are putting, you are using brain and you are doing smart work, even if you lose, you won't feel that much sad, because hard work के बाद जो lose होता है वो ज़्यादा बुरा लगता है. And you may break your psychology और गंदा trade ले लगे. So better don't do that. Try to make a rule like only one trade a day, something like that, and don't give much time. What I do is I only trade after 7 o'clock. Now I'm going to London because अभी मैं छुट्टी है, घर में हूँ, free हूँ. So I am looking for London only to trade. And even today is Friday and न्यू यॉर्क के सेशन के बाद आज क्लोज हो जाएगा, वीकेंड शुरू हो जाएगा कल 2 दिन का. So that's why I don't want to mess up that. Like what I'm saying is वॉल्यूम कम होता है न्यूयॉर्क सेशन में और मार्केट भी क्लोज होता है. सो अभी लंदन में थोड़ा वॉल्यूम रहेगा तो अभी कुछ ट्रेड देखना चाहता था एंड वी ऑलरेडी मिस्ड सम ट्रेड्स. दैट्स फाइन. देखो मिस हो गया तो डोंट हैव दैट रिग्रेट. यू शुड बी हैविंग दैट केयरलेस माइंडसेट, समथिंग लाइक अरे जाए भाड़ में जाए, ऐसा कुछ बनेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं. दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट. ओह मेरा लाइफ मेरे सामने. ओह मेरा लाइफ. अखियां तो तेन मैनू फाड़ दिया, तेरी यार बजी ने मैं तू ही है बस यारा. अखियां तो तेन मैनू मार दिया, स्टॉप लॉस अभी हिट ना हो गया, तेरी यार बजी ने मैं तू ही है बस यारा. दिल सुनसुनाती निगाहों से फरफराती निगाहों से उठाए हुए. Okay, bro. See,
break even, you got to break even, you should be feeling lucky. Like at least break even, it's not loss. Why did you do that, bro? Hey, shit, you could have stopped trading yesterday. आज ट्रेड ले लेते ना, क्यों? अरे, that's so sad, man. You shouldn't have done that. See, now you got to know your mistake, right? See, the best thing you did right now is आपने उस चीज़ को यहाँ पे कमेंट किया. What happened is, now you realize that double of the times that you shouldn't have done that, and from now you won't be doing that. Make sure, bro, and best of luck. Don't do that, guys. Like, I'm happy that you commented here, because that will affect your psychology, and whenever you will think of doing that, you may think of that, yeah, I did once, even I posted that comment also. Don't do that, don't do that. That's wrong. You know, see, you know your mistake. That's what. So this is how, like, you need to make mistakes, then only you will identify. Now you will fix this mistake, you may do another new mistake, then you will get to know that, and you will then fix it again. So get me? I'm hungry, guys. मुझे खाना है, लेकिन लाइव भी नहीं छोड़ना है. 5 मिनट लगेंगे खाना खाने. अरे अरे अरे, एक स्टोर डालता हूँ. So guys, we are live, as you can see, and यहाँ पे हमारा यूरो का ट्रेड जो 711 मॉडल 1:5 से ज़्यादा दे रहा है. वी आर वेटिंग फॉर क्या 1:2 देता है कि नहीं, चेक कर रहे हैं. एंड इवन इन गोल्ड वी गॉट 1:4. दिस वॉज आइडेंटिफाइड लाइव. या आई डिडंट टेक दिस ट्रेड, बट वी आइडेंटिफाइड दिस इन लाइव, गाइस. सो या जॉइन लाइव. Yeah, that's what, bro. It's exactly reflection to me. That's what you learn from your own mistakes. We got another break of structure to the high. If another tap to this order block, another bullish trade. यहाँ पे sideways है की, because ये DXY sideways. दे दे यार यहाँ पे ब्रेक आ, ये थोड़ा 1:2 दे दे. कितना दे 1:1.8. बट ऑफ कोर्स हम तो स्टॉप लॉस और TP लगा के छोड़ते. दैट्स व्हाट. एंड आल्सो व्हेन आई ओपन मार्केट आई फील लाइक आई वांट टू चेज एवरी मूवमेंट फॉर मोमेंट. दैट्स व्हाट. देखो, इवन माय मॉडल सजेस्ट दैट यू शुड टेक एंट्रीज एवरीवेयर, क्योंकि इवन आई गेट एंट्रीज एवरी टाइम एवरीवेयर. यू कैन सी ऑल. देख अभी जो मार्क किया है, दिस इज ऑल द एंट्रीज which can be taken, but we shouldn't take, because you should have that control, because this is not in a proper zone. That's what I'm waiting for. You get me? Like even the gold on asset, see, this is a trade, of course, and now I can think, okay, काश अगर लिया होता तो क्या मूव है यार. 1:4 कौन नहीं चाहता. देखो ये और ऊपर जाया जा रहा है. ऑफ कोर्स इतना कोई पकड़ता नहीं है, लेकिन मतलब इतना हम नहीं पकड़ते प्रैक्टिकली, बट स्टिल आई वुड थिंक. बट यू नो व्हाट, यू नीड टू हैव दैट, लाइक अरे that wasn't meant for us. If I the thing I need to have in my brain, or every trader should have, is we are not chasing the profit, we are chasing that we should be right most of the times. I want to be right. Even देखो अभी यहाँ पे मैं मार्क करूँगा, अगर अगला वाला मार्क करूँगा, अगर वो मैं ट्रेड नहीं लूँगा फिर भी वो हिट होगा, तो मेरे को खुशी होगी कि हाँ आई वॉज राइट, rather than I made money. क्योंकि in beginning if you are right, later you can make money, but in beginning if you start make money but you don't know you were right or wrong, there will be a point where you'll be losing everything. So first you need to build your win rate. अपना खुद का win rate increase करो, then अपना trade का. Get me? अभी देखो नीचे जा रहा है. ये क्यों नीचे जा रहा है? 1:1.5 है मेरा तो.
इवन इफ यू लाइक इंस्टाग्राम में जिनको मैंने सबको मॉडल दिया है मेरा 711 उसमें भी है कि टारगेट ओनली 1:1.5. इवन जो बूट कैम्प मेंबर्स थे उनको भी वही सिखाए थे 1:1.5 इज़ द स्वीटेस्ट स्पॉट. बट या 1:2 का अच्छा है. बट व्हाट द थिंग इज दिस इज़ नॉट अ ट्रेड लाइक आपको दिन में 1-2 मिल रहा है, आपको मिलते रहते ना. सो दैट्स वाई यू कैन हैव स्मॉलर आर रखो, अच्छा विन रेट बनाओ. क्योंकि इफ़ यू आर इन प्रॉफर्म गेम देन आर विन रेट मैटर्स अ लॉट. क्योंकि यू डोंट नीड टू गो टू ड्रॉ डाउन राइट. क्योंकि फॉर एग्जांपल आई विल से द विन रेट गेम इफ आई एम टारगेटिंग 1:10, okay, I can lose 9 times, win 1 times, I'll be still be at break even right. बट अगर ये 9 लॉसेस एक साथ आए स्ट्रीक में तो सिर्फ 4-5 लॉस में मेरा, अगर मैं 1% ऐसा कुछ टारगेट मतलब रिस्क कर रहा हूँ तो 4-5 लॉस में मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा. ओके, सो दैट्स व्हाट यू शुडंट डू दैट, यू नो. क्योंकि द बिगर द आर यू चेज उसमें लूजिंग स्ट्रीक बड़े होते हैं. लॉसेस मैटर नहीं करता, लॉसेस छोड़ो, लूजिंग स्ट्रीक देखो. क्योंकि अभी जो भी हम ब्रीच करते हैं वो लूजिंग स्ट्रीक की वजह से करते हैं. दैट्स व्हाट. एंड मेन थिंग आपको डिसिप्लिन, मतलब अपना जो भी आप जितना भी रिस्क करते हो पर ट्रेड में वो सब डिसिप्लिन रहना चाहिए, मतलब फिक्स रहना चाहिए इतना ही. ये देखो ये अपना आ रहा है ब्रेक इवन पे जाला भाई 1:1.5 दिया है, आपको 2 चाहिए. अरे यार ये 5 मिनट की एंट्री था ना. यस. Bro, what do you prefer for beginner doing with one fund or funded account? Funded account. Best thing a beginner can try out. If you want to lose his money, lose your money in funded account. Best thing I would say. Like if you are investing 10k, okay, I would say if you have 10,000 rupees to trade, okay, if you put it in your own account, bro, can you share your chart color? Okay, 1 second. So if you have 10,000 rupees, if you blow your 10,000 funds, that's like you're blowing one account, okay, your whole funds one account. If I use 10,000 and buy 5 funded accounts, you have 5 times chances, like 5 lives you have, you get me. So here you have only one life. Even if you break your psychology and you want to, you know, just over trading, in over trading you'll be losing one whole account with 10,000 rupees, but in here you have 5 chances left. So that's why I prefer for a beginner to go for funded account itself. And my chart color is symbol. देखो body the bearish candle is this gray color, and the body color, the green candle, the bullish candle will be the chart color, and chart color I will share. Border will be completely black or little lighter than that. Wick also. Canvas color is this one. This is the color code. This is the color code. You can pause and note it down if anyone wants this chart color. I also have another one. I said like this one. Hanna. This one. For this, what you need to do is ये जो ये है ना अपना, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, इसको ग्रीन करना पड़ेगा. वेट, इसको ये ग्रीन करो, ये अच्छा लगता है. तिमतिमाती निगाहों से छुपे हुए तेरे मेरे दिल के शहर पे बस तेरा हो गया. अरे यार देखो, this is how I'm waiting from literally 2 hours. We're not getting trade, we're not getting views in live, but this is what patience is. Extreme patience.
TP and SL color. Okay, go settings. Wait, let me share. For the TP color, wait, this is the chart color. Okay, now for TP color, TP is this. This is TP color, TP. And for SL, it's the gray. Okay, if you need the color code itself, I'll share. Wait, this is the SL. अगर कोई नया अभी ज्वाइन होगा ना, उसको लगेगा ये एंट्री लेवल से TP एंड SL है. तू मेरा हो गया, हो गया. तू में तोरे जाने की तमन्ना. Hey, welcome bro, no worries. My name is Pratik. My name is Pratik. I am 21-year-old. I am from Udupi. That's Karnataka. My full name is Pratik Shetty. I'm doing my MBA graduate. This is my details. Oh, you're Nikhil, Bangalore. Nice, nice. ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ? ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್. You live in Bangalore or you're based of like Bangalore based guy? Like your origin is from Bangalore. I'm from Maharashtra. Hi bro. Even I was like when I was young, I was brought up in Nasik, Maharashtra. That's why I'm a bit fluent in Hindi. I'm also from
ಹಾಯ್ ಬ್ರೂ ಮಣಿಕಂಠ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ? ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ ಬ್ರೋ? ಯಾ, ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೇಡರ್. ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೇಡರ್. ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಇವನ್ನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಧ್ರ, ಯು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓ, ತುಮಕೂರು, ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮದು ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಉಡುಪಿ. ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ. ಪೇ ಮಾಡಿದ ಫೋನ್ ಪೇ ನಂಬರ್ ಈಗ. ಹಲೋ, ಅಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಪೇ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 9535 9535 088 236. ಎಷ್ಟು? ಎಷ್ಟು ಪೇ? ಎಷ್ಟು? 1979. ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಬಂದು ನೋಡಿ. ಬಂದಾ? ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬ್ರೋ? 1 ಇಯರ್ ಬ್ರೋ. 1 ಇಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. 1 ಇಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಮಂತ್ ಬೇಕಿರಬೇಕು, ಒಂದೂವರೆ ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇನ್ನು ಫೋರೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆದರೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, 22-23 ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್, ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ. ಇದು ಎಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರೆ, ಇಂಚಿನ ಸೈಡ್ ವೈಸ್. 4 5 6 7 8 9 9 9 5 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ 1:2, ಇಟ್ಸ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ 1:1.5, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ನಾಟ್ even 15. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 1:1.5. 3 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಗುರು, ಏನು ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. One trade, if would have gotten one trade, that would have been best, bro. Message retracted. The reason? Love me. ಟನ್ 1 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡುವ. 1 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ರೋಕ್ ದ ಲೋ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಎಂಟ್ರಿ. 1 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಹೈ ಬ್ರೇಕ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ an order block. This is not a good order block. This high back, this is an order block. This whole candle, no, not a good structures. Nothing good. Love me, love me.
ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್. ನಂಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. there's no one. I don't have anyone like from whom I started trading, I would say. Nothing. Trading inspiration, I don't like, to be honest. I don't have this kind of things like one guy inspires you, avn ತರ ಆಗಬೇಕು ಇವನ್ ತರ ಆಗಬೇಕು. no one's there. If someone is there who is very good, much disciplined, for example Khabib, UFC fighter Khabib, I like him because he's very much disciplined. I like that guy. He's not my inspiration. Like, I like that guy, like he's very disciplined, so something like that. I like the mindset, I like their thought process, but no one is, like, there's nothing like inspiration, like I should be like them, nothing like that. Yeah, wait me. Nimde bro. Trading all inspiration. Manikanta. What USD is doing? USD is dumping. This had to be an SL. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. That's good thing. Oh wait me, I'll do a thing. ಅವನೆಷ್ಟು 2 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವನೆಷ್ಟು 2ಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಕೊಡ್ತದ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಅದು. ಕರೆಕ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಲೈಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ವಿಲ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಲೈವ್ ನಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕೌಂಟ್. 1 2 3 4 5. ಕರೆಕ್ಟ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಲೇ. ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಕೆಳಗೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೀಗ. ಕಿಲ್ ಝೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಲಂಡನ್ ಕಿಲ್ ಝೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು. ಲಂಡನ್ ಕಿಲ್ ಝೋನು 325 ತನಕ ಅಷ್ಟೆ. ಇನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 20 minutes ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್. ಆರ್ಎಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕಿಲ್ ಝೋನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಜೆ ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಷನ್ಗೆ. Manipulation, you kid. Manipulating. ಟ್ರೇಡರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗೇಮರ್ ಆಗೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಫಾರ್ಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಪಿಪ್ಸು, ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್. Next will be funded trader, FTM, funded trader market, funded squad, good funded trader, blueberry. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆಲ್ಫಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಂದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. हाय मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और ट्रेड लूँ यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप पे साइकोलॉजी. लेकिन मैं कब से बैठा हूँ ओनली बिकॉज आई नीड टू टेक अ सेल साइड एंट्री. ओके बट नाउ आई एम गेटिंग दैट व्हाट आई कैन से that kick
to take entry on here, but because I am live, I have control. Psychology is getting safe. In 1 minute, even in 1 minute, the structure isn't broken yet. It's still bullish. This low has been broken, but that's not a valid swing. So nonsense. JBP also swing के अंदर है बेबी. Gold is bullish. Gold we could have trades, but never breaking rules. If it's Euro USD, it's Euro USD. I'm waiting some structure to form. 5 minute में 5 मिनट में क्या कर रहा है, ऐसा स्विंग के अंदर है अभी भी. सो वी आर वेटिंग कुछ स्विंग ब्रेक कर दे एंड वी कैन टेक एनी एंट्री. होप ये स्विंग ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो विल टेक एन एंट्री ऑन ऑर्डर ब्लॉक. क्रेजी एंट्री. Love me, love me. If you want gold entry, this is bullish too. In 1 minute we'll see. This side and broke. This is sweep. No bias. Like अभी कुछ नहीं है. Swing के अंदर है. This is the swing high, which has been swept actually. This is the low. So we need any one side breakout to identify any trade. This is going downside right now. We'll see. Love me, you're with me.
How to identify order block? Simple. When a swing is going upside, whenever a break of structure happens, break of structure happens, the last candle in this swing will be the order block. For this swing, if I say, if this here is the swing high broken here, the last candle, this will be the order block. If the swing broke here, you can see a swing got broken here, so this will be the next order block. Simple. This is the valid order block. And if you want a proper reversal order blocks, when the market structure shifts, this is the breakout structure, right? When the market structure shifts, for example, if this is I'll go to bigger time frame. When the market structure shifts, like a big bearish move comes, and the breakout structure happens in the opposite direction, like see the lows are getting broken, but here instead of low the high got broken. So after high gets broken, the last candle, this will be the valid order block, which you can use for trading reversals and big moves. This order block are just for continuation trades. I think I'll be sitting till New York session for trades. My model is not giving me trades, guys. Oh my god, so bad. छोटे मोटे मूव हम ट्रेड ना करते ही. How to find that the price will respect the order block and we can take the trade until we should wait to enter that? See, here actually what happens is, how this model works is, whenever a good when like you need to confirm it with higher time frame bias. I would say how, like if I'm seeing at 1 hour chart, okay, now the price is bullish here, it had then the breakout structure, the trend is something like this, okay. So if this is a breakout structure has happened, so my bias is bullish, and if the price is coming down till here, okay, so and also there is a supply zone here, so I will be having that, okay, when the price will reach here, I will get a confirmation that from here the price will reverse. So when I will drop to the smaller time frame, I will look into that place and wait for this type of market structure shift and all, market structure shift in these zones. Whenever I get a market structure shift in those, I will mark the order block and I'll wait for the tap, that's all. Whenever the taps, I will enter. But this order block got disrespected, like this market structure shift happened here. So because after this market structure shift, immediately we want the tap on this order block. If it doesn't tap and rather it makes another breakout structure, which happened here, so I'll mark the next order block, and that would be this. And after the tap on this order block, we got to move. So I'll be doing this until I get a tap on order block. Like if another breakout structure happens, I'll mark the another order block. If another happens, I'll mark the another. That's what. And just we'll enter on the tap. That's all. We should wait until the order block gets tapped. And of course, this model should be formed in a proper zone. Like for example, if I'm now looking for, this is a proper zone now. I have marked this zone. This is order block zone. So I'm waiting for the price in the smaller time frame to reverse from here. So I'm waiting for sell side entry. So I'm waiting for sell side break of structure and tap on order block. So if I get order block, if I get a break of market structure shift to sell side and immediately order block, I can enter on just the tap. You need to follow the plan, that's all. Even if it's a loss or profit, just use one strict method and follow that.
How boring a day can be, man. From morning I have nothing to do. I'll do a thing. I'll leave this till like let the live be on. The price can break the order block and continue opposite side also, right? Yeah, that's a nice question. But see, what I want to say is, you're combining this with the market structure. As market structure says, if the price is bullish, and price will be breaking higher highs, you know. Okay, so the moment it starts, it breaks the higher low, it means it has changed its characteristics. It should have went and broken this high before breaking this low, right? But what it did do, it broken the high, like it broke the low, sorry. It was breaking the highs here. From here it broke high, from here it broke high, from here it broke high. But the moment rather than breaking the high it broke the low, it means that price has turned bearish now. So I got a confirmation that it has to go bearish, but I need a point from where I should enter for the higher probability and better moves. So I'll be waiting for an order block tap, and of course I will be having this, like I'll be having confirmation that okay, the market has shifted to bearish, so there is no chance of the price to break this high again for now, until and unless it goes down and again it come back. So as if I proper, if the price is respecting the price action, if the price is following the market structure, then it won't break this high. So if I entered somewhere, I can enter anywhere in this range, okay, but for the better entry and better move, I'll be waiting for the price to tap on the last candle itself, the range order block. And of course it shouldn't break this high, so I'll be getting at least how much big is order block, I'll be getting at least the same movement to the opposite side. So yeah, even if the price again goes back to the order block also, I will be waiting just for a 1:1 or 1:1.5. That's it. My target will be only this much. Okay, if it goes and breaks this low also, we'll see. In order, if it has turned bearish properly, it will of course break this low also. Okay, but yeah, we are catching the momentum. So yeah, there may happen case like it also breaks the low, like it breaks the low and then also then starts breaking the high. That will happen only when, if the price is like if there is a higher time frame, for example, this is in a smaller time frame, it's like it has broken the low. But if you check the higher time frame, it may be the market structure may be something other, like it's breaking the highs, so that's where you need to use high time frame bias also. For example, if the price is something like this is in the high time frame, 1 hour time frame. Okay, you have zoomed here, you zoom in here, and you can see the price is breaking lows, breaking lows, breaking lows, breaking lows, breaking lows. Okay, it will be something like this for this swing range, the side one. Okay, next what happens is you are like you have marked this order block. Okay, now you have marked this order block. You are thinking the price has went again the order block, you are thinking to go again against, but what happens is in the higher time frame it's like it has done the pullback. So even if it come to order block, it will give a small move and again it starts going up. So that's what, if you are lucky enough, you can get an entry and you can profit in the small swing only. You know what I'm saying? So that's what it respects the market structure. That's what order block is just for an entry confirmation, where you can enter on just a week, because I like to take my entry. And here you can see, as I said, I was like again it tapped the order block. As you can see, the order block has been mitigated once already. Okay, the order block was mitigated and it was still here, it was mitigated. So now the unfilled unmitigated zone will be this much. If I would have taken an entry on this tap only, and if I kept the stop loss here, we are again getting, we got 1:1.3, 1:1.5 will be somewhat here. I usually go for 1:1 and 1:1.5. We'll see, will it give 1:1.5, but I won't enter this order block because my bias is bearish. That's all. Why my bias is bearish is because, as I said, higher time frame, you can see in higher time frame it has done the break of structure to the upside. Now it has to pull back, right? So I don't want to go more bullish from here and then get stopped out because of pullback. So that's why I'm waiting for a pullback in the high time frame, so that I can trade bearish side in the smaller time frame. That's what. See, here one trade we have gotten, like, see, even if this was a trade, but see, this didn't break the swing high,
So it's like very risky to trade in these zones to go bullish more, because it's already done a break of structure. And see, after break of structure, what happens? If market is respecting price action, market does higher high, then low, then breaks this higher high, then immediately it comes down for pullback, right? So we are in this zone, so we are not in this zone. Of course we are bullish here, but there is a chances of coming pullback, so why we shouldn't be getting trapped in that. So I'm not going to bearish entries. But yeah, my model is being respected here, so I'm just marking that. Even in gold, it was a bullish trade, it was proper bullish trade, because in high time frame also there was nothing complicating. You see, this was in high time frame the structure is bearish, and as it was completely bearish, it was pulling back from some of these zones. If I mark a proper zone, this would be a zone. So till that comes here, I can try for bullish. Once it enters this zone in my smaller time frame, I'll be looking for only bearish trades or downside trades, because that's where the pullback has been completed according to me. I use this fib to identify that. If I would have entered here, as I said, here my psychology would have been so much affected, like it went till there and started coming down again. But yeah, I need a proper sell side trade today to trade, or else no trade. That's it. Nasdaq analysis. I don't trade Nasdaq, but I can do the analysis. According to me, I can. NQ. Nasdaq. What should we type here? I don't know. I don't have idea. Is this one the chart? This one, Nasdaq 100. This one, right? If yes, please let me know. It's closed. Data is delayed. Oh, it opened. NQ. This one, NDX, not this one. Okay. NQ. Yeah, okay. What is this? For Nasdaq, let's see. There was a gap up open. This is a weekend, so it's very risky to trade. In daily, market is very consolidating in inside range. As yesterday was bullish, and there are lots of low resistance liquidity in daily. Market may go bullish again. What is this price action, guys? Is this the right chart? I don't have much idea about this. I can only do analysis because of my price action knowledge. That's it. Nasdaq 100, NST 100, Nasdaq. Here is the US index. Okay, this is bit clear chart. Okay, this is daily the same thing as I said. It's consolidating a lot today. You can see a large imbalance left here. We'll see what's the structure. The structure is still bullish in our 15-minute. You can see here, if it's a sweep, this is the low left. It should be broken. The high is still protected. This may be a good zone for anyone to plan for a sell side entry, I would say. Price has to fill this gap, guys. This is so much, it's a lot of gaps left. From here in 5 minutes, the market has not broken it. This didn't broke. Here you have a high. In 15 minutes, as I see, yeah, this will be some rejection zone above. That's all I can say. From here you can try for, if you get a market structure shift to the downside from the upside, you can go for sell side, because there are lots of imbalances left down,
and also this is low resistance liquidities, you can see, because this high has been swept by this, so this is very strong high, you can say. But as the structure is bullish, but still as the displacement has happened, it has to pull back. It can't just blindly go up. So my thought process or my plan would be planning for a bearish entry from this zone whenever a market structure shift happens in 5 minutes to the bearish side. That's all I can suggest. This price is going up again. See, will it give 1:1.5? See, it is taking a lot of time to hit 1:1.5 itself. If it was a proper, according to my bias, a sell side trade, we could have got good move, because in this range I think a better move should be only be, आपको मिल सकते हैं अगर आप सेल साइड जाओगे तो, rather than going bullish in euro. In gold 5 मिनट में एंट्री नहीं है इधर, एक मिनट में बन रही है छोटी छोटी एंट्रीज. यहाँ पे सिर्फ ट्रेलिंग हो सकती है, एंट्री नहीं हो सकती. एंट्री तो यहीं पे होती जो मैंने मार्क किया है, एंड यहाँ से यहाँ तक 1:10. If you know how to trail, then you could have. This has given almost 1:1.4, but not 1:1.5. But why? Let's see. Love me, I wait with love. एक काम करता हूँ, I'll wait, I'll come back after on 5 minutes. मैं थोड़ा खाना खा के तो भूख लग रहा है. It's 3:30 हो गया, अभी तक खाना क्यों नहीं खाया. I'll be back. You guys can come later if you want at 3:40, something like that, because we have nothing in this market. Today is Friday and it's very boring. वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में, क्या ट्रेड करूँगा.
Yo, what's up? Minus 1.5 TP, man. Crazy. That's crazy. That's crazy. Yo. Like, seriously? We got 3 TPs on live, and that too. Bali Beku ladies match game. Hello, guys. We got this TP, man. Crazy. I didn't expect this. It was reversing, like, it went again. Nothing is there in the 5 minute, guys. कुछ भी नहीं है. The whole London session is sideways. Even the Tokyo session was sideways. I'm just hoping for some price action that can offer me a trade. Even the sell side, it didn't broke the low or else. Okay, in GBP it's breaking the high. In USD it hasn't broken, but again consider it as SMT. So if this sustains here as a sweep now, we can enter on this order block.
I'm entering for this trade. Okay, it's moving. Ishara. Today we have news again. Okay. Not important news, by the way. We have entered this trade, guys. We are in the trade. I'm in the trade right now. Yeah. I don't know. I was just doing a quick scalp. It has given 1:1. I'm thinking to book. Go. 1:1. My entry was somewhere here. It has given 1:1, but I'm waiting for 1:1.5 because rules are rules.
might come back after the TP or SL.
ये होगा